India economic issues and relating to the planning and mobilization of the resources, growth, development and unemployment. Axis India 1991 and liberalizations and reforms and the lesson it offers in the contemporary times and 250 words. In light of the historical economics and the contractions of the Indian economic include and by the COVID-19 pandemic and the calls and for the economic reforms to the revive growth, the article discussion the 1991 economic reforms and the road ahead for India. Key demand and of the questions evolute India 1991 liberalization reforms and the lesson it is the offer in contemporary time description essays. When asked to the analysis, you have to the examine and die and methodically and the structures or natures and of the topic and by the separatings it into the component and part and the presented them as other wrote in other summary. Structure of the answer. Introduction. Start with brief and the background of this question. Talk first about the pre and reform era the Indian economic before the 1991 reforms and was based on the strict regulations and could be the characterized and as other control system the public sector and the accounted and for other significant proportion of the economic and with the so called critically and sector reserve करता है for the public sector को इंडिस्पाइट करता है there the low clusters performance को and then move on to the discuss 1991 economic reforms जो है highlight करता है the pros and the cons of those reforms को explain in what way they are the relevant even in the today times. Conclusion with waivers. Introduction. 30 years ago liberalization remain करता launch in 1991 में and complete it's the 30 years in 2021. The 1991 and was the landmark movement in India post independence history and there the changes the nature of the economic in fundamental ways के द्वारा a several balance of the payments problems को जो जाता है triggered करता है and the acute economic crisis 1991 में in response India economic established launch की गई थी a मल्टी प्रोगनेड रिफॉर्म्स के द्वारा एंड एजेंडा जो रिपेयर किया गया था इंडिया में एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस शीट्स एंड द इग्नाइट ग्रोथ के द्वारा जो 3 डिकेट्स लेटर द कंट्री फेस्ड ने किया था अनदर बिग टेस्ट एंड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड वाइल द टू क्राइसिस डिफर द बेस्टली इन द कॉन्टेक्ट एंड द स्ट्रक्चर दे आर द completely comparables and in their the responsible in their the respective and several body. India Post 1919 and economic strategy. It dismantled and the based network of the controlled and the permits and there the dominated the economic systems. It is redefined and the role of the state as other facilitation of the economic and transactions and as other neutral and regulators and reasons rather than the primary and providers and of the goods and the service tax. Goods and service. It led to move and away and from either remains and of the important substitution and to the integrated full and with the global trading system. Effect करता है and of the reform को. And by the first and the decades of 21st century, India began to be the seen and as one of the fastest growing emerging market. जो इंडिया ने उसने एनुअली एवरेज को ग्रोथ रेट को एंड 1919 से लेकर 2010 हैज़ बीन द 6.6% एंड विच इज़ द ऑलमोस्ट एंड आउट एंड देयर द परफॉर्मेंस एंड जीडीपी ग्रोथ एंड रेट द surpassed and 5% and mark in the early 1980. The 1991 and reforms the unleashed the inner energies and of the Indian entrepreneurships and gave the untold choice to consumers and change the face of the Indian economic. Far from the property increasing and for the first time and there was a substantial reduction in it.
1991 में जो रिफॉर्म्स किए गए थे, बूस्टेड किए गए थे सर्विस सेक्टर के द्वारा, प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल टू द डेवलप्ड देयर स्किल्स। 2021 में पैंडेमिक क्राइसिस हुआ था, उसमें क्या होता था, पैंडेमिक इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉकडाउन ब्रोट द व्हील ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द ग्रीडिंग होल्ड and reaching either sharp economic and contractions, and this has the resulted and in other collapse in productions and following the disruptions and caused by the pandemic, and which in the terms and has the caused other fail in the demand. Faced with other collapse in demand, and it is the appropriated and to the increase the fiscal deficit, and the government allowed the fiscal deficit to expand to the 9.6% last year. जो इकोनॉमिक थी इस स्ट्रीकिंग कर रही थी एट अदर रैपिड पेस, एंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफॉल्ट ऑन इट्स द रेवेन्यू एंड कमिटमेंट एंड टू द स्टेट। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी आर शोरिंग कर रही थी कपल्स एंड विद द प्रॉपर्टी एंड अमोंग मासेस के द्वारा, एंड सच एज द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू द रिफॉर्म्स एंड मे नॉट द वर्क एंड नाउ, एंड इट कैन बी द सीन इन द प्रोटेक्टेड इमर्जिंग इमेनिटिंग्स एंड फ्रॉम थ्री फार्म्स लॉ। वे फॉरवर्ड में क्या था, सब्सटेनिंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इन द शॉर्ट टर्म्स एंड सब्सटेनिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इज अ की एंड टू द रिवाइनिंग ग्रोथ की। जो करेंटली पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होता है इज हाईली द डिसीरेबल रहता है फॉर द प्रोवाइडिंग मोर फंड के लिए एंड फॉर द वैक्सीनेशंस एंड टू कवर द एक्सपेंडेड डिमांड एंड फॉर द मनरेगा एंड बेथ which is the providing to be the valuable safety net. Also there is other need and to the undertake other credibles and path and for the defined reduction and over the next 3 years and reviving the revenue and targeted and to other more released। जो maturity and supporting reforms है 1991 में रिफॉर्म किया था सक्सीड बिकॉज दे आर द स्ट्रक्चर्स एंड अराउंड ए द कोर पैकेट ऑफ द मेयोरिटी एंड द सपोर्टेड टर्म्स। Thus the need and is to and the move away from other long list of the reforms towards other more strategic जो अप्रोच रहता है फोकसिंग रहता है एंड ऑन द मोस्ट क्राइसिस के द्वारा एंड रिफॉर्म की गई थी नीडेड इमीडिएटली। इन दिस कॉन्टेक्ट में क्या था, जो द पावर सेक्टर्स द फाइनेंशियल सिस्टम जो रहता है गवर्नमेंट फंक्शंस का एंड इवन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड नीड्स रिफॉर्म्स। इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में क्या रहता है, इन्वेस्टिंग इज आर द की सोर्सेज ऑफ द इग्रेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस कॉन्टेक्ट। perceptions regarding growth prospected are key. The policy framework and must be the supportive रहता है of fresh and investment and so that the entrepreneurships are the encouraging to take the risk। जो non economic factor रहता है such as the peaceful and the environment and social and cohesion are also the relevant। The government must begin to the act on all thus funds। Maruti model of disinvestment and the government should reduce it is the ownerships to 26% in each the understanding including the task including the bank and to the strategic partners, and like it did under the Maruti disinvestment following the 1991 reforms। in the contact इस contact में क्या है, जो PSU लाइक करता है एयर इंडिया को एंड PVCL को एंड concurrent and can be sold and within the next 6 months and with the commitment and that to the dozens and PSU would be the dispatched at the Maruti models every year for the next 5 years।
This will help in the generating billions of the rupees of investables. जो सरप्लस एंड फॉर द गवर्नमेंट का रहता है, मल्टी स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं अप्रोच करते हैं. टुडे रिफॉर्म्स आल्सो द रिक्वायर्ड मच मोर डिस्कशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग. द जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है नीड करती है टू द वर्क इन द टेंडम एंड विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर impacted by reforms and the decisions. The 1991 reforms and the helped the economic stave and of other crises and then the bloom. It is the time and to the outline other credibles and new reforms and agenda and that will not the just brings GDP back to the pre and crisis levels and but also the ensures and growth rates and the higher than it had been. It entered the pandemic. The current account deficits and sad of India is widening in the protect and do you think it is a place of the mixed news and for India mixed news for India and does it is the signified economic recovery? Comment. जो करंट अकाउंट डिफिशिट है ऑफ इंडिया का इस वेडनिंग करता है इन द प्रोटेस्ट. डू यू थिंक आप समझते हैं अ पीस ऑफ द मिक्स्ड न्यूज़ ऑफ फॉर इंडिया के लिए डज इट इज़ द सिग्निफाइज इकोनॉमिक रिकवरी. कमेंट टू वर्ड्स. इंट्रोडक्शन. जो करंट अकाउंट डिफिसिट रहता है रेफर करता है टू अदर सिचुएशंस एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द फूड एंड गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेंट एंड बाय द करंट एक्साइटिंग्स द वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस इम्पोर्टेड एंड बाय इट इज measures the gap between the money receipts into the share out and country on the trade and goods and the services is also the transfer of the money from the domestically and honored factor of the productions award. India current account and deficit CAD has the widened as per the last data. It is around 1% of the gross domestic GDP. It is the relief and for the Indian economic because 19% growth in the impact and is the main factors behind that. A current account can be the harmful and to the economy. Unsustainable if either current account deficit is the financial and through the borrowing it is said to be more and unsustainable and this is because borrowing is the unsustainable in the long terms and the countries and with will be the burdened and with the high interest and payment and जो रशिया was enables करता है to pay its the foreign debt को and back in the 1998 and others the developing countries and such as the Brazil African countries and have the experiences and similar and repayments. जो